Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, arrays and loops in Python. In this chapter, you will learn about arrays, looping statements, jump statements and programs for jump statements. In the previous classes, you have learned about variables, data types, operators, statements, etc. In this chapter, you will learn about arrays and how to create loop in Python. ओके प्रीवियस क्लासेस में आपने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड स्टेटमेंट्स के बारे में, राइट? इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एरेज के बारे में एंड किस तरह से लूप क्रिएट किया जाता है पाइथन में. ओके, एरेज आर स्पेशल वेरिएबल्स यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन सिंगल वेरिएबल. There are 4 collection data types in Python that is used in making an array. They are list, tuple, set, डिक्शनरी. तो एरेज आपके स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं जिनको मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं एक सिंगल वेरिएबल में. तो 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स आपके पाइथन में, ओके, जो है आपके लिस्ट, ट्यूपल, सेट एंड डिक्शनरी. List items are ordered, changeable and allowed duplicate values. They are written in square brackets and coded. This list is equals to pencil, eraser and then bracket closed, and see, you can see this is the square bracket. Then print this list. Output pen, pencil, eraser. अब लिस्ट आइटम्स आपके ऑर्डर होते हैं, चेंजेबल होते हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करते हैं. ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपके होंगे और कोटेड होते हैं, राइट? जैसे कि आपने ये इंस्ट्रक्शंस दी कि इसको आपको प्रिंट करना है, पेन, पेंसिल, इरेजर, तो आउटपुट आपको मिलेगा, वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, राइट? जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, all collection data types are indexed and the first item has indexed 0 in square bracket always except set items. देखिए आपका जितना भी कलेक्शन डेटा टाइप्स है वो इंडेक्स्ड होता है. जो पहला आइटम है ना उसका इंडेक्स क्या होगा? 0 एंड इन आपका स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, नेक्स्ट tuple items are ordered, indexed, allow duplicate value but are unchangeable. They are written in round brackets and coded. This tuple is equals to pen, pencil, eraser in round brackets, print this tuple. Okay. अब tuple items भी आपके ordered होते हैं, indexed होते हैं, duplicate value को allow करते हैं, but ये unchangeable होते हैं, right? इनको round brackets में लिखा जाता है और ये quoted होते हैं. Okay. Next, set items are unordered, unchangeable, unindexed and does not allow duplicate value. They are written in curly brackets and quoted. My set is equals to pen, pencil, eraser in curly brackets, print my set. देखिए सेट आइटम्स आपके अनऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं, अनइंडेक्स्ड होते हैं एंड ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करते. ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं और कोटेड होते हैं, राइट? लाइक पेन, पेंसिल, इरेजर ये आपके कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे गए. डिक्शनरी आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट. दे आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यू इन की वैल्यू पेयर्स. They are also written in curly brackets but in pairs. This dict is equals to name Raj, class 8, section A, then bracket close, print this dict. And output name Raj, class 8, section A. अब डिक्शनरी आइटम्स आपके ऑर्डर होते हैं, चेंजेबल होते हैं बट डुप्लीकेट अलाउ नहीं करते और इनको यूज़ किया जाता है डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए इन की वैल्यू पेयर्स में. ये हमेशा आपके कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं बट ये हमेशा आपके पेयर में होते हैं. ओके, जैसे दिस डिक्ट इज इक्वल्स टू दिया नेम राज, उसका क्लास एंड सेक्शन दिया गया, राइट? Just for your information, array items can be of any data type, that is string, integer or fraction. Array items जो है वो किसी भी data type का हो सकता है, चाहे वो string हो, चाहे integer हो या फिर fraction हो. Looping statements. In Python, there are statements that need to be repeated until a condition is satisfied. For such cases, looping statements are used. Python provides 2 types of looping statements, for and while. For statement are used to repeat instruction for a fixed number of times a time period. While statement are used to repeat instruction until a condition is satisfied. देखिए क्या होता है कि पाइथन में ना स्टेटमेंट होती हैं, उनको रिपीट करना होता है जबकि कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए. तो ऐसे केसेस में लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ किए जाते हैं जो आपके 2 तरह के हैं, फॉर एंड वाइल. पाइथन जो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो फॉर स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने के लिए फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स या टाइम पीरियड में. ओके, एंड वाइल स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने के लिए जब तक कि कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती, राइट? Just for information, in developing application, loop statements are very important and useful. Developing applications में looping statements काफ़ी important and useful होती हैं.
here are two questions given. Define array and differentiate between set and dictionary items. इनके आंसर आप खुद से करेंगे, right? For statement. The for statement is used to repeat statement for a fixed number of times. The syntax of for statement is for variable in angle bracket, in interactor, in angle bracket, then statement. ओके अच्छा, अब जो फॉर स्टेटमेंट है उसको यूज़ किया जाता है स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स में. ओके, सिंटेक्स इसका ये गिवन है आपका. एंगल ब्रैकेट में लिखना है वेरिएबल, द इंटरैक्टर लिखना है, राइट. लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल ऑफ वीक डेज. ओके, प्रोग्राम क्रिएटेड यूजिंग फॉर स्टेटमेंट ऑफ वीक डेज. तो देखिए डेज आप इसमें इनपुट डालेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वीक डेज डालना है. ओके, आपके ब्रैकेट्स में. देन फॉर एक्स इन डेज प्रिंट एक्स. ओके, तो देखो वी विल गेट दिस आउटपुट. आपको क्या आउटपुट मिलेगा? सी, संडे से लेके सैटरडे तक आपका एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाएगा. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे. ओके, नाउ यूजिंग रेंज फंक्शन. द रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ लूप इन फॉर स्टेटमेंट टू इंटीग्रेट ओवर times mentioned. The syntax of range is range and then n in bracket with for statement for variable in angle bracket in range 0 to n and then statement. देखिए जो रेंज फंक्शन है उसको यूज किया जाता है लूप को क्रिएट करने के लिए फॉर स्टेटमेंट के लिए टू इंटीग्रेट ओवर टाइम्स मेंशन्ड. ओके, तो सिंटेक्स इसका देखिए अगेन आपका क्या है? फॉर वेरिएबल देन इन रेंज आपका 0 to n. while statement. The while statement is used to repeat statement until the condition is satisfied. That is, when condition is false, the loop stops. The syntax for while statement is while expression statements. Okay, while statement को use किया जाता है statement को repeat करने के लिए जब तक कि condition satisfied नहीं होती. यानी कि condition अगर false है तो loop stop हो जाएगा. Okay, and here's a syntax given of while statement, which is while then expression the statements. Again, here is a question, what output will you get if you code? तो इसका आंसर आप खुद से करेंगे. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल. चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ओके ओके, हैशटैग प्रोग्राम used to demonstrate whilst underscore statement, then I is equals to 0. A is equals to input, then bracket के अंदर आपका आएगा name of your favorite book, while I angle len A, while statement then if A then I in the square bracket equals to double equals to E in single inverted comma, or A I in double in bracket comma double equals to H in inverted commas, then I plus is equals to 1. Continue. Okay, and what will be the output? ये देखिए आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा. Okay, infinite loop. If the condition given never become false, the loop will never stop and run indefinitely. This creates an infinite loop. For example, for infinite loop, while one is to print loop in double inverted comma, output will be loop will be printed infinite times until कंट्रोल प्लस सी इज प्रेस्ड. देखिए अगर कंडीशन कभी फॉल्स हो गई नहीं तो वो लूप आपका स्टॉप ही नहीं होगा, वो इनडेफिनेटली रन करता रहेगा. ठीक है, तो इससे एक इनफाइनाइट आपका लूप बनेगा जिसका एग्जाम्पल है. तो आउटपुट में आपका क्या आएगा कि लूप विल बी प्रिंटेड इनफाइनाइट टाइम्स. आपका लूप प्रिंट होगा जब तक कि कंट्रोल प्लस सी को प्रेस नहीं किया जाता. ओके, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. नॉन जीरो वैल्यू ऑलवेज इंडिकेट ट्रू कंडीशन, जीरो इंडिकेट फॉल्स कंडीशन. जो नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा ट्रू कंडीशन को इंडिकेट करती हैं, जबकि जीरो इंडिकेट करता है फॉल्स कंडीशन को. राइट, नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट्स. In loop, there are times when the control of the program is transferred out of the loop even when the condition is not satisfied. Python provides two types of jump statements, break and continue. आप देखिए लूप में कुछ ऐसा टाइम होता है जो कंट्रोल जो होता है प्रोग्राम का वो ट्रांसफर हो जाता है आउट ऑफ द लूप इवन जब कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं है. तो पाइथन आपके दो तरह के जंप स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, विच इज ब्रेक एंड कंटिन्यू. ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट. द ब्रेक एंड कंटिन्यू आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ कीवर्ड टू ब्रिंग द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप. The syntax of the loop are hashtag loop statement break, hashtag loop statement continue, hashtag the code to be skipped.
ओके अब ब्रेक एंड कंटिन्यू को यूज़ किया जाता है कीवर्ड की फॉर्म में, जैसे कि टू ब्रिंग द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। तो सिंटेक्स देखिए दे रखा है आपका लूप स्टेटमेंट का, देन ब्रेक एंड देन लूप स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू। ओके, प्रोग्राम्स फॉर जंप स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम 1 टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन लूप। चलिए अब हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है ब्रेक स्टेटमेंट को लूप में, तो कैसे करेंगे? हैशटैग program to demonstrate jump statement underscore break loop for number in range, condition हम देंगे ब्रैकेट में 0,25 then colon, then if number is equals to 5 colon then break, print ब्रैकेट के अंदर the number is comma number then print ब्रैकेट के अंदर out of loop and what will we get? See the result. Okay, next program 2 to demonstrate the use of continuous statement in loop. Okay, अब हमें पहले हमने आपका demonstrate किया था ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, अब हम करेंगे कंटिन्यूस स्टेटमेंट। ओके, सी इसमें आपका होगा हैशटैग प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट जंप स्टेटमेंट अंडरस्कोर कंटिन्यू लूप फॉर नंबर इन रेंज 0 to 25 colon if equals to 5 colon then continue, print the number is comma number, print out of loop and we will get this output. Okay, so here is the output. Summing up, arrays are special variables used to store multiple value in one single variable. There are 4 collection data types used in Python for making an array. They are list items, tuple items, set items, and dictionary items. Python provides 2 types of loop statements for and while. In developing applications, looping statements are very important and useful. For statements are used to repeat instructions for a fixed time period, while statements are used to repeat instruction until a condition is satisfied. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और चैप्टर की प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.